It is often said that Atal era is over and now is the time of Narendra Modi, and the BJP is a one-man show overshadowed by the saffron giant. Going into a comparative study, one realizes that if Atal Bihari Vajpayee, who was one of the founding forces of the party, then led an alliance in the NDA of more than 20 parties, then this time the NDA has a strong alliance of 29 parties with two others giving outside support. When we pose the question to political analyst R. Rajagopalan, he says that if things go in favor of the NDA, then the same cabinet which once ruled under Vajpayee will take over, with the only difference that this time it will be Narendra Modi who will be the commander. An NNI's election exclusive. Atal Bihari Vajpayee was recently in the news when a Congress spokesperson, Sanjay Jha, called him the weakest prime minister that India has ever produced. This comes at a time when elections are on and soothsayers suggest that BJP-led NDA have an edge this time. Interestingly, Atal had the distinction of leading an alliance of 20 parties during his tenure. He was twice Prime Minister of India, first from May 16th to 1st of June 1996 and then from 19th of March 1998 to 22nd of May 2004. He served as the 11th Prime Minister of India. After 96, BJP emerged as the single largest force in Lok Sabha. He formed the government, but in 13 days flat, the government had a bitter fall. The United Front took over under H.D. Devegowda, but that only lasted till 1998. The NDA in 1999 lost majority but managed to gain maximum mileage in the following polls and return to power. This was a mighty alliance of nearly 24 parties. There is a similarity in the massive alliance that Modi leads and Atal Bihari Vajpayee earlier led. So is it going to be similar times like that of Atal Bihari Vajpayee? We ask R. Rajagopalan. वो तो अभी दिन देखना है. अभी आने वाले 17 तारीख, 24 तारीख, 30 तारीख जो पोलिंग के ऊपर है, मुझे लगता है तब तक कोई घटना नहीं होना चाहिए. सेम स्टेटस को मेंटेन करना है. लेकिन बार बार मैं कह रहा है, आने वाले दिन में चुनाव जो भी परिणाम होगा, एनडीए को पक्ष में तो हवा है, कांग्रेस को खिलाफ है. इसीलिए मुझे लगता है वाजपेयी सरकार का जो भी नीति थी 180, 190 उसमें बैठेगा लगता है. जो वाजपेयी का गवर्नमेंट में जो भी 24 पार्टी वो सारा वापस आ गई थी. 1999 से 2003 तक जितना भी संगठन थे एनडीए के अंदर, वो सारा फिर रीबर्थ हो गया है, पुनर्जन्म ले लिया उसको. तो इसीलिए मुझे लगता है एनडीए सरकार में जितना भी विभाग किसी किसी पार्टी का था, कितना कितना खोटा था, वो सारा नरेंद्र मोदी साहब को पुराना फाइल दूर मिठा करके रखना है, सेम चलाना है. एक्सेप्ट वाजपेयी वो नरेंद्र मोदी बैठेगा, उसमें अडवाणी नहीं होगा, बाकी पूरा कैबिनेट सेम होगा मुझे लगता है. Narendra Modi a year back spoke at length in a business award ceremony on the erstwhile Atal Bihari Vajpayee government. He said that then Atal government had fared well on the economic front despite sanctions post the nuclear test of 1998. He said Atal had also run a successful coalition. He added that over the past 10 years, things had gone bad after UPA came to power, notably reaching out to the masses via the Mission 272 Plus online campaign. The BJP clears the Vajpayee government managed India's infrastructure betterment, researching of foreign exchange reserves and judicious liberalization. This time on, nearly 29 parties are in an alliance to keep the NDA strong, with two giving outside support. So how is the support for the BJP and NDA shaping up this time? R. Rajagopalan reviews the situation. सुनिए, अभी यूपी बिहार नरेंद्र मोदी का पक्ष में है, जो उसमें परिणाम नरेंद्र मोदी को आगे करेगा. लेकिन एनडीए को आगे करने वाले हैं दो स्टेट है जिसने यूपीए को पक्का सपोर्ट किया है. 2 स्टेट्स, आंध्रा एंड तमिलनाडु, यूपीए को ताकत दिया है, उसको हिला दिया करके टीडीपी एनडीए तरफ आ गया. जो डीएमके एडीएमके तो नहीं आया है, लेकिन जो 40 सीट्स तमिलनाडु में है, 40 सीट्स तो पूरी की पूरी नरेंद्र मोदी किट्टी में जाने वाले हैं. क्योंकि जो अभी एडीएमके सपोर्ट करेगा, पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, कोई क्रूशियल बिल्स वगैरह हो, डीएमके पीछे से सपोर्ट करेगा. जैसे मुलायम सिंह यादव मायावती ने यूपीए सरकार को बचाया, ऐसे टीडीपी जगन रेड्डी, जयललिता डीएमके, करुणानिधि, ये चारों मिल करके कम से कम जो 80-90 सीट है नरेंद्र मोदी किट्टी में असल में है. देयरफॉर जयललिता करुणानिधि अलग अलग नहीं देखना है. करुणानिधि साहब को 5 सीट, 8 सीट, 10 सीट आ जाते, वो भी नरेंद्र मोदी किट्टी में जाएगी आखिर में क्रूशियल टाइम. This report was brought to you by NNIS.